Assalamu alaikum to all. We are formally starting our lecture. The topic today we have is conjunction. Conjunction is one of the parts of speech, as we are going with the series of parts of speech and understanding why something used and where we have to place them in a sentence. Today the topic we have is conjunction and what is basically conjunction. आसान अल्फाजों में सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से डेफिनेशन बताना चाहूंगा. कंजंक्शन का काम जो है वो कनेक्ट करना होता है. वो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, वो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. बस ये आपने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज कंजंक्शन. इट कनेक्ट्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, राइट. यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ. कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर. इट इज अ जॉइनिंग वर्ड. यहाँ पे कुछ टाइप्स दी गई हैं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कि यहाँ पे क्या क्या टाइप्स है हमारे पास कंजंक्शंस के अंदर. वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शंस, वी हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एज वेल. कोरिलेटिव का क्या यूज होता है, कोरिलेटिव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ये आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा. बिफोर दैट, जैसे हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेयर इज अ नाउन इन अ सेंटेंस, हमारा एक ही टारगेट है, हाउ टू इंप्रूव सेंटेंस मेकिंग. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है. अब इस फॉर्मूले के अंदर कंजंक्शन कहाँ पे फिट होता है और कहाँ इसको हम प्लेस कर सकते हैं, वही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और कंजंक्शन को बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते हुए आगे चलेंगे. अभी तक जो चीजें आप लोगों ने समझी हैं वो ये है कि कंजंक्शन क्या होता है. इट कैन कनेक्ट वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, मिलाता है ताकि मोर मीनिंग प्रोवाइड कर सके. जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी होते हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, इसका रोल प्ले करता है कंजंक्शन. फिर इसकी टाइप्स कितनी है, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आगे चलते हैं. वी आर गोइंग टू हैव टाइप्स इन डिटेल एज वेल. लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड. Alright, on this slide we have coordinating conjunction, जहाँ पे हम लोग for, जिसको preposition के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये conjunction का रोल भी प्ले करता है. कैसे पता चलेगा? when it is connecting two sentences, right? conjunction जैसे preposition है और conjunction में difference कैसे आप निकालेंगे? preposition time के बारे में बात करता है, place के बारे में बात करता है. यहाँ पे for जो बात करेगा वो reason के बारे में बात करेगा as a coordinating conjunction. लेकिन ये preposition का भी रोल प्ले करता है, बट वो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रहा होता. वहां पे इट कैन प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन. वेल, ये रेयर इस्तेमाल होता है एज कंजंक्शन. वेल, ये कंजंक्शन रेयरली इस्तेमाल होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, हम एज ए preposition इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. बट फॉर योर नॉलेज, वी also use conjunction as well as we also use preposition as conjunction as well. All right, now we are going to move to words and, nor, but, or, yet and so. दो सेंटेंसेस को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पे देखें कि एंड का जो डेफिनेशन है, इन एडिशन टू, मजीद एडिशन करना. लाइक जॉन हेट्स यू अ लॉट एंड ही विल नेवर टॉक टू यू. एंड दो क्लॉजेस को ज्वाइन करवा रहा है. इसी तरीके से नॉर आप यहाँ पे देखें, बर्ड देखें और यट सो. एग्जाम्पल्स गिवन है. हम लोग नॉर को इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो नॉट के लिए, बर्ड को इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, इसके साथ साथ और इस्तेमाल करते हैं ऑप्शनल के लिए. You can take tea or coffee. When you're offering someone, you're using or in a sentence. What would you like to take, tea or coffee? If you say tea and coffee, so there is not, if you're using and, that is not optional. But if you're using or, that is optional. समझ के इनको इस्तेमाल करना है. सेंटेंसेस में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को और आसान तरीके से आप कैसे याद कर सकते हैं? एक वर्ड आप याद रखें, फैन बॉयज. फैन, F for, A for and, N for nor, but for be, and O for or, and Y for yet, and S for so. I know you must be tired, so I will let you rest. यहाँ पे देखें, एक कॉमा हम लोगों ने इस्तेमाल किया, पंक्चुएशन. अब ये रूल्स ऑफ पंक्चुएशंस क्या हैं और ये कंजंक्शन के साथ बहुत ज्यादा इनका ताल्लुक है. वजह उसकी ये कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं
कि एंड से पहले कॉमा लगाना है या नहीं लगाना, कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ प्लेस करना है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती, जिस वजह से अक्सर लोग कॉमा सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाते। थोड़ा सा एडवांस है, जब पंक्चुएशंस में आपको पढ़ाऊंगा तो इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो ये चीजें और हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग अलग है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस अलग है, और एडवर्बल कंजंक्शंस को भी कैसे प्लेस किया जाता है और पंक्चुएशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फैन बॉय से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर लेना। उसके बाद वी हैव अदर टाइप एज वेल, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये स्लाइड आपके सामने शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना आपको बताना है कि ये वो वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर। अगर आपके इल्म में होंगे तो लाजमी सी बात है कि ये आपके अमल में आ जाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अलग होते हैं, राइट? तो इनको यूज करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सेंटेंसेस में अलग अलग जगहों पे प्लेस किए जाते हैं। इवन की अगर मैं बात करूं तो इट हैज 3 प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस। जब ये 3 जगहों पे प्लेस किया जा सकता है तो फिर ये 3 एंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड करता है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग एज वेल। इन दिस वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हर वर्ड का अपना यूज है। कुछ कॉमनली वर्ड्स हैं, कॉमन कंजंक्शंस हैं जिनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो अगली स्लाइड में हमारे सामने आएंगे। जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में आप देखें, आफ्टर ऑल दो वी हैव दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, as if, as long as, much as soon as। आप ये इस्तेमाल करते होंगे कुछ अपने सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन जितने ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जितना थॉरली आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी राइटिंग में उतनी ज्यादा ही अट्रैक्शन पैदा होगी। आई वुड लाइक टू रिपीट कि हम बेसिकली हैबिट्स हैं और हम हैबिट्स का ही रिजल्ट है, जिसकी वजह से जिन चीज़ों की हम प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ें हमें आती हैं, और उन्हीं चीज़ों के थ्रू हम अपनी जो पेंटिंग पेंट कर रहे हैं उसके अंदर कलर्स ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे वर्ड्स आपको आएंगे, जितनी जगहों पे आप इन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे, आप उतनी अच्छी पिक्चर्स दे सकते हैं। Now we are further moving on towards our next slide. We have subordinating conjunctions. कुछ यहाँ पे commonly इस्तेमाल किए जाते हैं, राइटिंग में बड़े काम आते हैं। इवन ओ लेवल्स अगर आप पढ़ रहे हैं, ओ लेवल्स के अंदर आपकी ये conjunctions बहुत sentences के अंदर range develop कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कौन से कंजंक्शंस हैं जो कंपैरिजन के लिए एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज। टाइम के लिए कुछ हैं, कंसेशन के लिए, कंडीशन के लिए, रीजन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए, प्लेस के लिए, रिलेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, मैनर के लिए। ये जब आपको चीजें मालूम होंगी तो ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज इन्हें इस्तेमाल करना बहुत रेयर आपको नजर आया कि लोग रेयरली ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। जैसे हम लोग रीजन के लिए हमेशा बिकॉज ही इस्तेमाल करते हैं, in order to, so that, as। we rarely use these kind of words. Why we don't do it? Because हम चीजों को लिमिटेड जानते हैं, जिसकी वजह से हमारा यूज भी चीजों का लिमिटेड होता है। We don't write stories, we don't write incidents, we don't write things. स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको लिखना भी जरूरी है। तो it is like icing on the cake when you are learning a language and you have an opportunity to write about how did you spend your day, what kind of things you have done। वो तमाम चीजें आप लिखें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोशिश करें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं इन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिख के फिर रीड करें कि अगर आप अपनी कोई भी स्टोरी या कोई भी इंसिडेंट किसी को समझाना चाहते हैं, क्या वो आपको समझ आ रहा है। अगर वो आपको आपके अल्फाजों में समझ आ जाता है, दैट मीन्स दूसरे को भी समझ आ जाएगा जैसे आप समझाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, और लिखने के लिए नए नए वर्ड्स आपके सामने होने चाहिए और नए नए तरीके आपके सामने होने चाहिए। उसके लिए कंजंक्शंस विल प्ले पाइवोटल रोल। ऑलराइट, वी हैव 20 सेंटेंसेस। फर्दर कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हैं जिसके अंदर हम कंजंक्शंस के कुछ यूजेस देखेंगे। व्हेन आई सी यू स्माइल आई कांट फेस द वर्ल्ड। ऑलराइट, ये टाइम के लिए अलग अलग वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये सेंटेंसेस आप खुद से पढ़ के देखें। इस स्लाइड से आपको हेल्प हो जाएगी कि हाउ टू यूज दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन अ सेंटेंस। डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेवरदलेस, इट वाज अ रफ गेम, नेवरदलेस वी प्रिवेल्ड। नेवरदलेस यहाँ पे बट वाले सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे नेवरदलेस मींस बट, लेकिन उससे पहले देखें
Semicolon आपके सामने यूज किया जा रहा है. Sentence number 8. If you see this one, it was a rough game. Semicolon, then we have nevertheless, then we have comma, then we have we prevailed. अब ये रूल क्या है? इस रूल को समझने के लिए बेसिकली आपको सेंटेंसेस में कंजंक्शंस कहाँ कहाँ पर हैं, जब ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा तो फिर पंक्चुएशन वाला रूल आपको इजीली समझ आ सकता है. Like we are right now, we are learning basic. In basic, what we need to do is to identify कि कहाँ पे क्या words हैं और कैसे वो अपना role play कर रहे हैं, और उनकी placement change होने की वजह से entire meaning change क्यों हो रहा है sentence का. इसको जानने के लिए what we need to do is to read, to write, and to analyze what we are up to. What am I writing? Why I'm writing this? What I need to improve? What is my target? If you don't have any target, if you don't have any goal to achieve, then whatever you do will definitely go in vain. All right, we have now correlative conjunctions. यहाँ पे इन्हें pair of conjunctions भी किया कहा जा सकता है, क्योंकि ये pair के अंदर मौजूद होते हैं. कुछ common है और कुछ ये तमाम के तमाम common ही हैं. बेसिकली अगर आप देखें तो आपको अक्सर ये, अगर आप रीडर हैं तो आपके सामने से तमाम के तमाम वर्ड्स गुजरे होंगे, लेकिन आप लोगों से अगर कम्युनिकेट करें जो अच्छे लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, those who are using too many words and too many ideas while communicating with people, they use pair of conjunctions most of the time in their sentences. If you listen native speakers, not actually, I'm not talking about most of our people, they repeat their words. If you listen native speakers, those who are actual speakers, or if you listen TED Talk, you will find people who are using all of these things to, add more flavors in their communication. So if you want to develop that particular skill, you have to utilize every single opportunity. Like whatever comes in front of you, you have to learn it, you have to do thorough practice, you have to give extra time to it, then it will become your part actually. See this one, both and end, the first one in correlative conjunctions. Michael can both read and write. If you don't use both and end in your sentences, then you will never understand how to use them on the spot. Like spontaneously, you want to become a speaker who can speak spontaneously without taking time in thinking, and like someone is using English language in front of you and you want to be spontaneous, like what the person is asking, you are ready to answer every time. For that, you need to use a language. If you do it, you will improve it. So see over here, not only but also. This is one of my favorite as well. I usually use in sentences when I'm communicating with person who is actually looking more educated, I should say that. The one who can understand the difference of using different pairs of conjunctions in front of a person. So when you are using such level, you need to analyze that the person who is sitting in front of you is also up to a level that he can understand your points. Otherwise, every communication will definitely go in vain. For English is a language which can create better impression on people as well. Don't worry about that. But for that, you have to use different words. But over here, see this one, we have pair of conjunctions. See, not only Mary, but also Gabriel is from Italy. In this way, he is not only interested in learning the language, but also using the language. When you make your own sentences, either to tease anyone or just to make fun of anyone, you can go with this particular flow. Either or, no sooner than, the more you can dream, the more you can do. That's the great one as well. The more you can dream, the more you can do. Use these things in your sentences so people will enjoy reading your sentences and enjoy talking with you as well. English is a different language. Like you have to make some of the commitments with yourself. Like what kind of commitments you have to make with yourself, it's kind of a practice. I should say that it is something which will help you to improve yourself rapidly or quickly as well. For 2 hours tomorrow, you have to use only English for communicating with everyone who comes in front of you. Just make a deal, like you will speak only for 2 hours in a day, English language and nothing else. You will only respond to a person in English and you will not use any other language
And what you need to notice is that which are the words, like at where are the things which are not going right? What are the things which you are not doing well? You need to analyze what kind of words I don't know in English so you can improve them. But if you don't do these kind of practices, mark my words, you will never become a person who can impress someone while communicating in English. It would become a hard nut to crack for you. In easy words, you can say that it will become a bitter pill to swallow. एक कड़वी गोली हो जाएगी जिसे आपने निगलना है, तो उसको आसान बनाने के लिए practice makes things perfect, or definitely a person is a super creation. It will make you perfect as well. Hardly when such that neither nor whether or as, rather than scarcely when. All right, these are correlative conjunctions, and we are moving on. Thank you very much, Ms. Mehta. The more you dream, the more you can do. That's very right as well. Now we have one more type which was not actually mentioned on the very first slide. That is conjunctive adverbs. Now this is conjunctive adverbs. Why can is used in the first? Because it can place, when you are using pair of conjunctions, you cannot apply the rule like you are applying the rule in different conjunctions. You cannot apply the same rule with this as well. It can definitely come in the start of sentence because you are using two clauses and you are comparing them and you are using them in a sentence. So rule of applying after every clause, like after in the middle of a sentence, like you are talking about coordinating, subordinating, these rules do not apply on this one as well. All right, see this one, conjunctive adverbs list. Now this one you have to memorize. These are called conjunctive adverbs. Accordingly, additionally, also, anyway, besides, certainly, comparatively, we have many more over here. Nevertheless, moreover, meanwhile, however, nonetheless, rather, otherwise, similarly, still, therefore, thereafter, thus, undoubtedly, yet. So you have to memorize these conjunctive adverbs, how we are going to use them in a sentence and what are the actual reasons. Like every word has a reason. Whenever you are using a word in a sentence, every word has a reason why you are placing that particular word or phrase or clause in a sentence, right? Now we are moving towards the last slide of this particular topic, that is some of the very commonly used conjunctive adverbs connects two independent clauses. Again, I would like to repeat, जब हम types of sentences पढ़ेंगे तो आपको dependent independent clauses के बीच में clarity समझ आ जाएगी that what is independent clause and what is dependent clause. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, I would like to repeat, clause का formula जो होता है वो subject plus predicate, that means information related to subject which subject plus verb. It does not most of the time carry an object as well. एक sentences में clauses हो सकते हैं like he is handsome and intelligent. Now two things about a person. See over here, I'm using two adjectives over in the sentence. Now see this one, conjunctive adverbs. The conjunctive adverbs connect to independent clauses. Cause और effect के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं therefore, hence, accordingly, then, thus. टाइम के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, कंपैरिजन के लिए, समराइज करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए भी. हम जैसे मिसाल के तौर पे किसी बात के हवाले से आप कहना चाहते हैं कि बेशक, indeed, he is right. So you can place them at different places in a sentence as well. जैसे however you can use in the last of a sentence as well. Why you are placing that in the last of a sentence? Because it can come in the start of a sentence as well, in the middle of a sentence as well, in the end of a sentence. That is kind of, you can say that, advanced concept for you right now to understand. But these are the things which we call conjunctions. तो आपने दोबारा से मैं conjunctive adverbs ये आप लोगों ने देख लिए क्या होते हैं, इनकी कुछ definitions हैं, like cause and effect के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कोई exercise करेगा, therefore he will improve his health. अब यहाँ पे therefore लगाना, result show करवाना. If you work hard, ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा. इस तरीके से आप सेंटेंसेस को अलग अलग जब सेंटेंसेस बनाएंगे, when I'm going to teach you tenses, you will be able to understand these points easily.
And then we had correlative conjunctions. इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ sentences थे. अभी आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि you have to find them in your sentences. So that's it for today's recording. And as we have this topic conjunction, and now the next topic we are going to have articles. That is very important as well. But right now your work is to identify them where these things are in sentences. So thank you very much and have a nice day.